Good morning, students. Here it is the second video of the chapter Chemical Reactions and Equation. In this video, we'll learn about chemical equation. In this video, we'll learn about chemical equation. Number 2, why should Y2 balance chemical equation. In this video we will discuss about these two topics only, and the next video will discuss how to balance a chemical equation. So first, that is chemical equation, we will discuss about it. That is, what is chemical equation? Suppose if I am telling you that hydrogen represent hydrogen, how you will represent it? By writing H or H2. Just suppose I am telling you represent oxygen. Oxygen, how you can represent it? By O or O2. Suppose water, you will say H2O. So here H means hydrogen atom, H2 means hydrogen molecule, O means oxygen atom, O2 means oxygen molecule, and water, as this one is compound, so H2O is the formula of water. Formula. Suppose, so hydrogen H, it represents hydrogen atom, there is, it is symbol of hydrogen atom, and this one is also the formula of hydrogen atom. So by symbol we represent atoms, and by formula we represent molecule or compound. Okay. Now, if I am telling you that hydrogen reacts with oxygen to form water, it represents that a reaction is takes place. A reaction is taking place. There is hydrogen reacts with oxygen to form water. So you cannot represent it by this formula or this symbol only. So how you can represent a chemical reaction? That is called the chemical equation. So what is chemical equation? Chemical equation is a representation of a chemical reaction by the symbol or formula of the species participate in reaction or produced in reaction, or you can say involved in reaction. So let me write the definition of chemical equation. Very important. We'll write the definition of chemical equation. What is chemical equation? The representation of chemical reaction by the symbol and formula. Sometimes it is in formula LA or LAE, formula. So symbol and formula, or you can say symbol or formula of the substances is involved in it is called chemical equation. So let me discuss about it. What is chemical equation? The representation, the process by which you can represent it. किसका? Of chemical reaction, representation of chemical reaction by the symbol, through which you can represent it by the symbol or formula and formula of the substances
Substances means it may be reactants. Reactants means which participate in reaction, or may be products means which are formed after the reaction. All the substances involved in it is called chemical equation. I think it is clear. That is what is chemical equation. Next. So let's take an example. So water reacts with hydrogen reacts with oxygen to form water. Okay. So it is clear that the hydrogen and oxygen, they react, so they are reactants. Here R stands for reactants, and water that is formed here is known as product. So how to represent a chemical equation? We have to use arrow. You can say yield line. What it represents? It represents the direction of chemical reaction. Means towards which the chemical reaction is proceed. So here represented is left to right. Means the reaction starts here and ends here. So at the left side of arrow we have to represent reactants. At the right side we have to represent products. Remember, if more than one reactants are present, then you have to use plus in between them. Suppose A and B reacts. So how we can represent A plus B? Okay. C and D are formed. How we can represent them? C plus B. Okay. A and B, they are reactants. You will represent by A plus B. C and D, these are the products. So you will represent C plus D. You have to mention the states of reactants and products just beside the formula or the symbol of the reactants and products. Okay. In first bracket, suppose the reactant is solid. The reactant is solid. What do you write? As it represents solid. Suppose it is liquid, water, liquid, तो उसके साइड में हम लोग L लिखेंगे. Gas, it is G. It may be vapor, तो VAP. अच्छा. Suppose it is in aqueous solution. Aqueous means soluble in water. So sodium chloride NaCl. It is soluble in water. So how will you represent it? NaCl Aq. Sodium chloride, it is soluble in water. So aqueous, we have to write Aq in first bracket. Just beside this salt. Okay. So you have to remember this one. तो हमें क्या याद रखना है कि ये जो एरो होंगे, एरो के लेफ्ट साइड में हम लोग किसको रखेंगे? रिएक्टेंट्स को रखेंगे. राइट में किसको रखेंगे? प्रोडक्ट्स को रखेंगे. अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे तो उन दोनों के बीच में क्या देंगे? प्लस देंगे. उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो स्टेट होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे. अगर रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट में चाहे कोई भी हो, अगर सॉलिड होगा तो S लिखेंगे उसके साइड में, लिक्विड होगा तो L लिखेंगे, गैसियस होगा तो G लिखेंगे, एक्वस होगा तो Aq लिखेंगे. ओके. Now let you try to write the equation for this reaction. अच्छा. Here the reactants are hydrogen and oxygen. So obviously hydrogen H2, oxygen O2. Arrow. What it will form? Here the product is water. The formula of water H2. Okay. Hydrogen gas, oxygen gas, water liquid. So here is the representation of the chemical equation.
We are not balancing the chemical equation. It is very clear to all of you that this reaction, this equation is not fully correct. Although we are writing just equation, हम लोग ये सीख रहे हैं कि equation क्या होता है, हम लोग कभी बैलेंसिंग में नहीं गए, बैलेंसिंग में आ रहा है में यह समझ में। चलो हम लोग को एक क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। सपोज बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम reacts with oxygen to form magnesium oxide. ठीक है, so here the reactants are magnesium and oxygen. These are the reactants. मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस वन इज प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट्स को हम लोग कौन से साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो पहले एरो देते हैं, लेफ्ट साइड में हम लोग किसको लिखेंगे, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट कौन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे हम लोग का सिंबल या फॉर्मूला। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन क्या होता है, O2। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो क्या देना है, प्लस। मैग्नीशियम के साइड में क्या लिखना है, सॉलिड। ऑक्सीजन के साइड में क्या लिखेंगे, गैस। राइट में क्या लिखना है, प्रोडक्ट, या द प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मूला MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्टेट क्लियर हो गया। सो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन। और एक बार बोल देते हैं हम लोगों को कि फर्स्ट हम लोग को क्या देना है, एरो देना है। लेफ्ट में क्या रखेंगे, रिएक्टेंट्स को, राइट में रखेंगे प्रोडक्ट को। एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे तो बीच में प्लस दे दो। ओके, प्रोडक्ट में भी सेम, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो बीच में प्लस दे दो। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट को मेंशन कर दो। अगर रिएक्शन में कुछ कंडीशन दे रहे हो, हीट दे रहे हो या हीट रिलीज हो रहा है तो उसको इंडिकेट कर दो। सो दिस वन इज द केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे कि why to balance chemical equation। ये केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, इन जनरली हम लोग यही सीखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि बैलेंसिंग क्यों करेंगे, रीजन फॉर बैलेंसिंग वो सीखते हैं पहले। देखिए C+O2 कार्बन सॉलिड, oxygen gas, what did it form, carbon dioxide. It is very well known for all of you, that is atomic mass of carbon is 12 U, oxygen is 16 U. So what is the mass of carbon, that is 12, here 16, there are 2 oxygen atoms, that is into 2, that is 32. In case of carbon dioxide, 12 plus 16, there are 2 oxygen atoms into 2, or you can do plus 16, that is 44. Now the total mass that is 44. Suppose gram. Here the total mass of the reactants are equal to the total mass of the products. What you can say, total mass of reactants equal to total mass of products। अच्छा, बोर्ड में जो लिखा जा रहा है अगर क्लियर नहीं हो रहा तो सुन के लिख लो। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। या द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग क्लास 9 में सीखे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास को हम लोग ना बना सकते हैं ना उसको घटा सकते हैं। तो मास क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। तो रिएक्शन में मास इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी, मस्ट बी, शुड बी नहीं, मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अगर ये हो रहा है
देन द केमिकल इक्वेशन इज करेक्ट। तो ये केमिकल इक्वेशन सही है, समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट, मैग्नीशियम reacts with oxygen to form magnesium oxide. Now, mass of magnesium, atomic mass of magnesium, it is very well known, that is 24 U, and oxygen, that is 16 U. Now, this one is 24, suppose gram, oxygen 16, there are 2 oxygen, that is 32 gram. Magnesium 24, oxygen 16, that is 40 gram. Now the total mass of the reactants, that is 56 gram. What you can say? Here the total mass of the reactants are not equal to the total mass of products. रिएक्टेंट का जो टोटल मास है, प्रोडक्ट का मास क्या है, उससे कम है। इसका मतलब क्या है, कितना कम है, 16 ग्राम कम है। तो 16 ग्राम का मास कम है, तो मास यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये तो पॉसिबल है नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन रॉन्ग है। दिस इक्वेशन इज ठीक, जहां पे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं होगा, दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है सर? देखो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या है, डिफरेंट है, मींस नंबर ऑफ ईच एटम, नंबर ऑफ ईच एटम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी डिफरेंट हो जाएगा, बट हम लोग ईच एटम का बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, देखो ईच एटम का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम हो जाएगा तो टोटल मास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब अगर टोटल मास इक्वल नहीं होगा तो रिएक्शन का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन रॉन्ग होगा। तो हम लोग इस इक्वेशन में क्या करना चाहिए, हमें नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना चाहिए। क्यों करेंगे, ताकि दोनों साइड में टोटल मास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसी प्रोसेस को बोला जाता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये क्लियर हो गया कि बैलेंस को क्यों करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस क्यों करना है। हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, बट बैलेंस क्यों करना है वो समझ में नहीं आता। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर नहीं होता है, इक्वेशन गलत है। तो इक्वेशन को करेक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाय मेकिंग द नंबर ऑफ ईच एटम्स ऑन द बोथ साइड इक्वल। देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह, अगर कभी भी आपको बोला जाए कि बैलेंसिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो ये मत सोचना कि नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करके, नहीं, नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करके हम लोग बैलेंसिंग करते तो है, लेकिन उसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के साथ इक्वल होना चाहिए। इक्वल करने के लिए करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, सपोज देयर इज 2, ठीक, नाउ चेक दैट इज द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करेंगे, बहुत इजी ट्रिक सब लोगों को दिखाएंगे, कोई टेंशन नहीं। Here, the number of magnesium is 2. Magnesium का atomic mass है 24, that is 48 gram. Oxygen 16 into 2, that is 32 gram. Total 80 gram. Okay. Now 2 into bracket magnesium 24, oxygen 16, that is 2 into 40, that is 80 gram. Now look. So total mass of the reactants are equal to the total mass of the products. So now this equation satisfies the law of conservation of mass.
It satisfies the law of conservation of mass. That's why we have to balance a chemical equation. तो अगर आपको पूछा जाए कि why should we balance a chemical equation, तो आंसर क्या होगा? Why to balance chemical equation? To satisfy the law of conservation of mass. That is to equal the total mass of reactants and total, okay, not for individual, total mass of products. So total mass of reactants और total mass of product को इक्वल करने के लिए हम लोग रिएक्शन का जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग बैलेंस करते हैं. कैसे बैलेंस करेंगे? बाय मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ एरो. एरो के दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर दो, इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड हो जाएगा. क्यों करेंगे? दोनों साइड में मास इक्वल करने के लिए. ओके, इतना पढ़ते रहो. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. थैंक यू.